Hello everyone. Today I bring for you a new chapter, photosynthesis in higher plants, and we will solve 20 previous year questions which are coming in the NEET exam. So let's start. First question. The first double product of CO2 fixation in the sorghum is. We all know that sorghum is a C4 plant. So what is the first double product? Now here option A is your correct answer, oxaloacetic acid. The first double product of CO2 fixation in sorghum, that is a C4 plant, is oxaloacetic acid. Second, which the following statement is incorrect? गलत कौन सा है? Stroma lamellae have PS1 only and lack NADP reductase. ये तो correct statement है. Grana lamellae has both PS1 and PS2. ये भी correct है, grana में होता है. Cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. Both ATP and NADPH plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. बिल्कुल सही. So option C is the incorrect one. Explanation. Now, stroma lamellae only undergo cyclic phosphorylation, which requires PS1 but not NADP reductase. Cyclic phosphorylation produces only ATP, while non-cyclic phosphorylation produces both ATP and NADPH. That's why option C is the incorrect one. Next question number 3, 2020 का question है ये. The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of. Option A, 1 molecule of 3 carbon compound. Option B, 1 molecule of 6 carbon compound. Option C, 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound. And option D is 2 molecule of 3 carbon compound. Here the answer is option number A, 1 molecule of 3 carbon compound. Explanation. Now in photorespiration, the oxygenation activity of Rubisco enzyme produces 1 molecule of 3 phosphoglycerate PGA and 1 molecule of 2 phosphoglycerate 2PG. A 3 carbon chemical is 3 phosphoglycerate, while a 2 carbon compound is 2 phosphoglycerate. That's why glycolate. That's why option A is the answer. Question number 4. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from. Light reaction में plastoquinone facilitates the transfer of electrons from. क्या होगा? Now here option number D is the answer. PS22 cytochrome B6F complex. Okay. Now 5 number question. During non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center at PS2, what is the source which replaces these electrons? तो कहाँ से electrons आता है? Now here the answer is option number A, water. Explanation. The electrons lost from photosystem 2 must be replenished during non-cyclic photophosphorylation. This is accomplished by using electrons that are photosynthesis in higher plants available as a result of water splitting. Okay, so water gives the electrons which replaces the empty portions. Next one, question number 6. Which the following statement is incorrect? In C4 plant, the site of Rubisco activity is mesophyll cell. The substrate molecule for Rubisco activity is a 5 carbon compound. ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है पहला, ये सही है. Next is Rubisco actions require ATP and NADPH. बिल्कुल सही. Rubisco is a bifunctional enzyme. ये भी correct. So here the answer is option number A. Okay. Incorrect one. Incorrect पूछा है ना. So option A is the answer. Next question. Question number 7. In hatch and slag pathway, the primary CO2 acceptor is. Hatch और slag के pathway में primary carbon dioxide acceptor कौन था? ना here. क्या वो रुबिस्को था? नहीं. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड? ये भी नहीं. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? ये भी नहीं. फॉस्फेनोल पायरुवेट PEP. Explanation.
Hatch and slack pathway is a cyclic pathway for CO2 fixation. The primary CO2 acceptor is a 3-carbon compound, that is the phosphoenol pyruvate, which is present in the mesophyll cells. Okay, so PEP is the answer. Next, question number 8. Which the following is not a product of light reaction in photosynthesis? कौन सा एक प्रोडक्ट नहीं है? सो हियर एटीपी तो प्रोडक्ट है ही, NADH नहीं है, NADPH ऑक्सीजन, ये सब प्रोडक्ट है. ओके, सो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा. एक्सप्लेनेशन. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ATP प्रोड्यूस्ड बाय chemiosmosis in the thylakoid membrane. Oxygen produced as a byproduct when water is the first electron donor. NADPH produced when reduced to PS1 absorbs another photon and converts NADP plus to NADPH. So NADH करके कुछ produce नहीं हो रहा. Okay, so this is the explanation. Option B is your answer. Now question number 9. With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which the following statement is not correct? पहला ऑप्शन, light saturation for carbon dioxide fixation occurs at 10% of full sunlight. सही है ये स्टेटमेंट. हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ढूंढना है ना. बी, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. बिल्कुल बढ़ाएगा. C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum. ये गलत हो गया स्टेटमेंट. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in carbon dioxide enriched atmosphere for higher yield. बिल्कुल सही. So here incorrect statement is the option number C. C4 plant can withstand a wide temperature range but C3 plant cannot. यहाँ पर उल्टा कर दिया उसने, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2017 का ये क्वेश्चन है. देखो अच्छे से. Phosphoenol pyruvate PEP is the primary CO2 acceptor in. किसका है ये CO2 acceptor, प्राइमरी CO2 acceptor? बताओ. It is the primary CO2 acceptor in C4 plants. Okay, explanation. Phosphoenol pyruvate is a 3-carbon molecule that act as a main carbon acceptor in the cytoplasm of the mesophyll cells. Carbon dioxide in the plants such as maize, sugarcane, sorghum. So option B is your answer. And mesophyll cells of C4 plants are maize, sugarcane, sorghum. These are the C4 plants. Question number 11. Which the following is the proteinaceous and water soluble photosynthetic pigment? Proteinaceous and वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें से कौन सा है? क्या वो क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, फाइकोसियानिन, एंथोसियानिन? ऑप्शन नंबर डी, एंथोसियानिन. एक्सप्लेनेशन. The presence of purple pigment called anthocyanin alters the color of leaves in some plant. Because of anthocyanin are water soluble, they are found in solutions in the cell water. So option D is the answer. Now question number 12. Which statement is wrong about photorespiration? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो सिंगल स्टेटमेंट ही होगा. देखो अच्छे से. RUBP bind with oxygen to form 2 molecules of phosphoglycolate. RUBP binds with oxygen to form 2 molecules of phosphoglycolate. पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया. बी में आते हैं. फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन C3 प्लांट नॉट C4 प्लांट. बिल्कुल सही. देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH. ये भी करेक्ट है. Rubisco is high affinity for CO2 than oxygen. बिल्कुल सही. So here the answer is option number A. Explanation. RUBP interact to oxygen and form one phosphoglycolate and one phosphoglycerate molecule. यहाँ पर उसने 2 दे दिया ना, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.
The process which makes major difference between C3 and C4 plants are, कौन सा प्रोसेस जो मेनली डिफरेंस दिखाता है C3 और C4 प्लांट के बीच में? पहला ये ऑप्शन फोटो रेस्पिरेशन आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत हो गया। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विशेस C3 plant from C4 plants. C4 plants have a unique leaf morphology that allows them to withstand higher temperature, respond to higher light intensities, lack the process of photorespiration and produces more biomass. So this is the answer, option number A. Question number 14. Phytochrome is a, phytochrome क्या है एक ना, 14 में यहां पर दिया गया phytochrome is a chromoprotein. Phytochrome is a chromoprotein. Explanation: it acts as a photoreceptor in plants. It is sensitive to light in the red and far red regions. ये था आपका explanation. Question number 15. In a chloroplast, the higher number of protons are found in. किस जगह पे ज्यादा नंबर के प्रोटॉन्स पाए जाएंगे ना? यहां पर क्या आंसर होगा? क्या स्ट्रोमा होगा? नहीं। लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स बिल्कुल सही, और बाकी दोनों के गलत। सो लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन क्लोरोप्लास्ट। एक्सप्लेनेशन: the lumen of thylakoid contains the most protons in chloroplast. Protons in the stroma of the chloroplast decreases in the number, whereas protons accumulate in the lumen of the thylakoid. A proton gradient is created across the thylakoid membrane as well as a detectable drop in pH in the lumen. This is your explanation. Question number 16. A plant in your garden avoids photorespiratory losses, has improved water use efficiency, so high rate of photosynthesis at high temperature, and has improved the efficiency of nitrogen utilization. In which the following physiological group will you assign this plant? Obviously, it will be assigned in the C4 plant. Okay, option B, C4 plant. C4 plant are unique in that they have a unique leaf anatomy, can withstand high temperature and respond to high light intensity, yet they lack a photorespiration. So, option B is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 2016 का ये क्वेश्चन था। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट वैक्यूल्स आर। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, क्या होगा वो? अभी हमने सॉल्व किया था, ऑप्शन डी, एंथोसियानिन। एंथोसियानिन आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वैक्यूल। ओके। 18. Emerson's enhancement effect and red drop has been instrumental in the discovery of. Emerson's enhancement effect and red drop has been instrumental in the discovery of. क्या होगा यहाँ पर ना? टू फोटोसिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, ये एमरसन्स ने डिस्कवर किया था। एक्सप्लेनेशन: The finding of two photosystems working simultaneously was aided by Emerson's amplification effect 1957 and red drop. Chlorella was the subject of Emerson's experiment. पूछा जाएगा क्वेश्चन कौन, मतलब किस प्लांट के ऊपर एमरसन्स एनहांसमेंट इफेक्ट वर्क किया था ना? क्लोरेला। ओके, याद रखना इसे। और 1957 में आया था एमरसन्स एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट। एनहांसमेंट इफेक्ट, एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट एक ही बात है, 1957। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. In photosynthesis, the light independent reactions takes place in photosynthesis, light independent reactions takes place at, क्या होगा ना? here the answer is option C, stroma matrix. okay, option C, stroma matrix में होगा ये। explanation: enzymatic reactions in the stroma incorporate carbon dioxide into the plant, resulting in the sugar production. These reactions are dependent on the product of light reactions and are not directly light driven, ATP and NADPH. Now the last question, question number 20. Anoxygenic photosynthesis is a characteristics of, anoxygenic photosynthesis is a characteristics of, ना आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, rhodospirillum.
Rhodospirillum uses H2S instead of H2O as a source of hydrogen. As a result, oxygen is not produced during photosynthesis. So here the answer is Rhodospirillum. इसके साथ हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस चैप्टर के, जो प्रीवियसली 10 ईयर में पूछे गए थे। आगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी कुछ ऐसे ही 22 क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसका वीडियो बहुत जल्दी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छी तरह से। कल मैंने जो आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ था 23 जून 2024, दोबारा जो नीट का पेपर हुआ था, उसका मैंने बॉटनी एंड जूलॉजी पोर्शन सेपरेटली क्वेश्चंस 50-50 क्वेश्चंस प्लस उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस किया था। वो वीडियो भी आप देख लेना, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा ये, और आने वाले चैप्टर्स का भी हम अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय जगन्नाथ।